Good afternoon, everybody. Shubh Sandhya. We all are privileged to be here on this platform today to pay our tribute to the legend Shri Jagdish Chandra Pant, IAS. As we all know, he has been the founding father of disaster management in India. Today, we all professionals working in this field are greatly indebted to him, and we are moving in the path shown by him. I also would like to acknowledge the presence of our legendary figures today here. Dr. Ranjan Khelkar, former Director General of India Meteorological Department, who has been shoulder to shoulder working with Dr. Pant sir, Shri Pant sir in finalization of this high-powered committee report. We would also like to acknowledge the presence of our esteemed former member NDMA, Shri K.M. Singh sir, former member NDMA, Professor Vinod Menon sir, Shri Professor Vinod Sharma sir, Vice Chairman, Sikkim State Disaster Management Authority, Professor R.K. Bhandari sir, Shri N.M. Prusti sir, Lawyer Ego sir, Mrs. Pant, Mr. Nikhil Pant, Mr. Akhil Pant, entire family members, Richa and its family members, and entire fraternity. As it's a very, very illuminating personality we are remembering today. Somebody says your body passes, goes away, but your soul remains. In the form of entire disaster management, the soul of Pant sir will always remain with us. He will remain as a illuminating, inspiring figure for us. And I have had whatever little time of around 2 years with him in the initial days. I was from the Indian Army side, from which sir's team? Sorry, I'm getting call from Anil Sinha sir. I'll just take it. I couldn't. It seems Sinha that sir, the upper limit has been reached and people are not able to join. I think there is a limit, yeah. it seems. Host, I'll request you to clear some place and give an entry to Anil Sinha sir. Keep at least 5 slots vacant so that Mudit, some of the people. richer staff can be asked to drop out maybe in that case, Mudit, quickly. Yeah. Or maybe on one screen, 5, 6 can sit together from the office, Mudit. Sir, Kennedy, kindly manage this because Anil Sinha sir needs to be allowed entry. Others, the dignitaries need to be allowed entries. So this is a historical meet today. We have gathered to pay rich tribute to Jagdish Chandra Pant sir. I won't take more time. I would straight away go to Mr. Nikhil Pant, who is son of Pant sir, and he is holding the reins of Richa and he is carrying forward the legacy of sir. So I welcome Nikhilji. I would hand it over to you for your deliberation and our sincere regards to your mother, ma'am, for joining us. Thank you very much. Over to you. Thank you, Colonel Sanjay, on behalf of the Pant family, the Richa family, and the entire fraternity that Papa had worked with. We are very, very grateful for the disaster management fraternity to be organizing this homage and this tribute to Shri J.C. Pant.
My mother, Dr. Abha Pant, is here. My brother Lalit Pant, my wife Ruchi Pant, my bhabhi Vibha Pant, Aditya. I can see Mudit, my son, is here. I don't know if Anusha is here or not. She's abroad. The whole family is very thankful. A large part of the Richa team is here. I will take maybe just a minute quickly because Shri JC Pant was a nation builder, and I'm actually getting overwhelmed. Uh, just give me a minute, please. No. So he was a Yes, nation builder, he was an institution builder, and Papa used to tell me that uh, he ruthlessly used the system to do good. He repeatedly told me, I ruthlessly used the system to do good. And by the time he was moving out into the retirement phase and the Richa he started in 1992 with the blessings and guidance of Gurudev Pandit Shriram Sharma Acharya from Shanti Kunj, he had figured out ways to deeply embed his work deep into the system so that people cannot change it and it sustains. And today's tribute is, I think, an example of that deep embedding that Sri JC Pant used to do. He used to be very far away from seeking accolades and awards. His main reward and award was the change in the country, and whichever department he went, he brought about some very fundamental changes. Through Richa, he then built up outside the system what he was trying to do within the system. And the today Richa is working across the country in 10 plus states. We have our offices, we have a staff of 250 people. We are working with the Indian Army, and so glad to know, Colonel, that you're from the Army, with the Indian Army in Kashmir, Baramulla, Kupwara at the border, and the Northeast also. We have just started in Manipur. So I wouldn't take much time because I think it's already 4:10. I have a small slot in the end as well. We as a family, both the Pant family and the Richa family, are very eager to hear about from all of you as to what Papa did as part of the disaster management work, which today is now very well known, and there is an act and there is NDMA. So over to you, Colonel, and we are here to listen today. thank you very much, Nikhilji. It's very emotional moment for you. I fully understand it's emotional moment for Sir and the entire family today. But we must, we must go back. We should share our memories, the nation building, the institution building, and the nation and the contribution to the society. He lived for it. The very first person I would like to go, I hope Anil Sinha sir is here. Uh, Host, is Anil Sinha sir around? Yes, yes. Yes, sir. None less than the member secretary of the High Power Committee and an officer from Indian Administrative Service. I mean, you can't have a better person to share the memory and pay rich tribute. In fact, this program is at the behest of at the behest of Anil Sinha sir and other legendary figures like Professor Vinod Sharma. So over to you, Anil sir. Okay, thank you, Sanjay, and thank you, everyone who has joined this meeting. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं थोड़ा हिंदी में भी बात करूंगा. अभी मैंने निखिल की बातचीत सुनी और मेरे कंप्यूटर पर आई डोंट नो ये जूम लिंक काम नहीं कर रहा है, तो मुझे फ़ोन में ज्वाइन करना पड़ रहा है मोबाइल पर, तो इसमें सबको उतनी आसानी से देख नहीं पा रहे हैं. लेकिन एनीवे मैं देख रहा हूँ कि पंत फैमिली के, सर की फैमिली के बहुत से मेंबर्स हैं और मुझे बहुत खुशी है कि निखिल खुद हैं और परिवार के और सदस्यों को भी उन्होंने इसमें शामिल किया है. पंत साहब के साथ के बारे में मैंने 1999 के पहले एक हमारे और दूसरे सीनियर होते थे, अनिल बोडिया साहब. आप में से कुछ लोग जानते होंगे. वो एजुकेशन में लॉन्ग टाइम उन्होंने काम किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी थे. मैं उनके साथ काम करता था. उन्होंने तब मुझे बताया था कि वह यूपी में जेसी पंत साहब ने जो काम किया है एजुकेशन के सेक्टर में, उस समय एजुकेशन में सब तो बाद में एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी भी रहे,
लेकिन बोडिया साहब ने कहा था कि उन्होंने जो एजुकेशन में काम किया, क्योंकि तब मैं डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन होता था, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम था, जो नेशनल लिटरेसी मिशन बाद में बना, तो उसका मैं डायरेक्टर था। तो मुझे बताया था कि भाई उनके काम को देखो कि पंत साहब ने क्या काम किया है। उसके बाद 99 में जब हाई पावर्ड कमेटी का सैंक्शन हो गया, अप्रूवल हो गया दी देन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी के द्वारा, तो I can't move this. हेलो। हाँ, रिक्वेस्टिंग एवरीबडी टू प्लीज म्यूट, आप लोग सब म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। हाँ, प्लीज कैरी ऑन हाँ, सर। जी जी। तो जब हाई पावर्ड कमेटी का अप्रूवल, अनुमोदन माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कर दिया, और वो फाइल मैं ही डील कर रहा था, तो फिर मेरे मन में आशंका हुई कि अरे भाई, ये कमेटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो कोई न कोई पॉलिटिशियन कमेटी का चेयरमैन होगा। तो हम भागे भागे अपने एडिशनल सेक्रेटरी भगत सिंह जी के साथ गए, हमारे सेक्रेटरी जो बरुआ साहब थे। मैंने कहा कि सर, मुझे इससे निकालिए, क्योंकि मैं किसी भी पॉलिटिशियन के साथ काम करने के लिए मैं उतना इंक्लाइंड नहीं हूँ। जो एक मिनिस्टर है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, वही काफी है इसे। तो लेकिन उसमें कोई समाधान नहीं निकला। मुझे बताया गया कि जब हाई पावर्ड कमेटी है तो भाई जॉइंट सेक्रेटरी होंगे, और आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं तो आप ही को हैंडल करना होगा। लेकिन पंत साहब जो सीन पर आए एज चेयरमैन, उसका क्रेडिट जाता है माननीय श्री सोमपाल जी को, जो कि उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और बहुत ही लर्नेड पॉलिटिशियन, बहुत वन ऑफ द हाईएस्ट लर्नेड पॉलिटिशियन जो है, वो मैंने उनको पाया। मैंने आज भी संपर्क करने की कोशिश की थी सोमपाल जी से, लेकिन लगता है कि शायद वो विदेश या कहीं हैं। कुछ उनका रिस्पांस नहीं मिला, नहीं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला था कि सर आप ज्वाइन कीजिए, आप बताइए कि पंत साहब के बारे में आपने कैसे सोचा था। बट एनीवे, तो फिर पंत साहब आए, और उस समय से मैं ये कहूँगा कि मेरी भी जिंदगी में, मेरे डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में टोटल बदलाव हो गया। यू सी, मैंने भी डिजास्टर मैनेजमेंट उस समय शुरू ही किया था। पंत साहब ने शायद डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन हाई पावर्ड कमेटी का जो भी काम हुआ, पहली तो चीज है, मेरा कहना है कि आई डोंट नो कि इसके नाम हाई पावर्ड होने से ही एचपीसी रह गया, लेकिन कमेटी का नाम होना चाहिए था जेसी पंत कमेटी। मैं ये पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ कि इसका नाम होना चाहिए था जेसी पंत कमेटी। लेकिन खैर, अब ये हिस्ट्री की बात हो गई, लेकिन इसको एक्नॉलेज करना बहुत ही आवश्यक है कि जो भी कुछ हाई पावर्ड कमेटी में हुआ, वो हम कह सकते हैं कि वो टोटली कॉन्सेप्ट, विजन, गाइडेंस, लीडरशिप, सोच जो है, अ, और समझ जो है, और जो पकड़ है, वो सारी चीज पंत साहब की थी। पूरे के पूरे इंडिया में जो 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको इन्वॉल्व करना, सभी के सभी राज्यों को इन्वॉल्व करना, कई मुख्य सचिवों को इस इन्वॉल्व करना, कुछ चीफ सेक्रेटरीज थे जो कि जो लॉ बना उसके लिए कमेटी बनाई थी पंत साहब ने, जिसके कि अध्यक्ष मेहरोत्रा साहब थे जो मध्य प्रदेश में। वो भी समझिए, पंत साहब यूपी के थे, हम बिहार के थे, मेहरोत्रा साहब मध्य प्रदेश के थे। लेकिन कहाँ से कहाँ पकड़ पकड़ के पंत साहब ने लोगों को ला करके, जो हम एक्ट आज देख रहे हैं, वो बेसिकली उसका ड्राफ्ट जो है मेहरोत्रा साहब ने बनाया, और उसको ऑफ कोर्स जो अप्रूवल वगैरह जो कमेटी में था, वो तो पंत साहब ने किया। तो और इस कमेटी ने, मैं ये कहूँगा, ऐसा काम किया कि लोग आज भी कहते हैं, और लोग से मेरा मतलब है कि मैं चीफ मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरीज की बात कर रहा हूँ, उस स्तर के लोग कहते हैं कि भाई ये तो बाइबल इन डिजास्टर मैनेजमेंट है। और 1999 से 2001, दो साल का ही समय था, हम लोगों ने बिल्कुल टाइम से रिपोर्ट दिया था, उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं लिया गया था। तो लोग कहते हैं कि ये तो बाइबल है, और तब जो आप लोगों ने दिया, अभी भी मोटा मोटी डिजास्टर मैनेजमेंट उसी स्थान पर है, और जो भी प्रगति हुई है, बहुत सी प्रगति हुई है, वो उसी की दिशा में हुई है जो कि हाई पावर्ड कमेटी ने दिखाया था। तो ये तो मोटा मोटी 600 एनजीओज को सबने, पंत सब ने, मतलब 600 से ज्यादा एनजीओज को इन्वॉल्व इसमें करना, कराना, और वो भी इंडिया के सारे कॉर्नर से।
नॉर्थ ये ईस्ट में गए रामकृष्ण मिशन में नरेंद्रपुर में, नॉर्थ में गए ये शांति कुंज में हरिद्वार में, साउथ में हम लोग गए विवेकानंद केंद्र में कन्याकुमारी में, और वेस्ट में अहमदाबाद में। तो इस तरीके से पूरे, और 600 से ज्यादा। और उस समय जो एक नेटवर्क बना था जिसका नाम क्या दिया गया था, मैं भूल भूल रहा हूँ अभी, लेकिन बहुत ही सुंदर नाम था उसका। तो ये अपने आप में इतनी यूनिक चीज रही है। और वासुदेवा। उसके, हाँ वासुदेवा। हाँ वासुदेवा, आप शर्मा जी बहुत वासुदेवा सही कह नाम रहे हैं। दिया था, वासुदेवा। हाँ, सर ने इसका नाम दिया था वासुदेवा। और वो बहुत ही मतलब ये अगर इस चीज को रिवाइव किया जाए और फिर से ले जाए, तो हम समझते हैं पूरे देश के लिए, समाज के लिए वो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था जो कि पंत सर ने दिया था। लेकिन खैर, मैं आगे की बात कह रहा हूँ कि मेरा तो पंत सर से, मैंने कहा कि 1999 के पहले मैंने सिर्फ नाम सुना था, लेकिन एक ऐसा लगाव उनके प्रति, ऐसा उनका आकर्षण था मेरे मन में, मस्तिष्क में, मेरे व्यक्तित्व में, कि हम जब भी बाद में, तो 2001 के बाद हम जापान चले गए सर, आप और कई स्टेट के कमीशन वगैरह को चेयर कर रहे थे। तो फिर इमीडिएट मुलाकात नहीं थी, लेकिन जब हम वापस आए हैं, तब हम जब भी मुझे देहरादून जाने का मौका लगा, तो हम हमेशा पॉइंट ये रखते थे कि नहीं, मुझे सर से और मैडम से जा करके मिलना है। और अभी भी हाल में मेरा सौभाग्य है कि अप्रैल के बिगनिंग में हम गए थे, और मुझे मुलाकात भी हुई, सर का आशीर्वाद भी मिला। तो मैं ये, निखिल ने सही कहा कि सर जो हैं बहुत ही रूथलेस थे। ये बात सही है कि रूथलेस, हम मेंबर सेक्रेटरी थे तो उसका ब्रंट मुझे 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 सहना पड़ता था। कई बार वो कह देते थे कि अनिल, ये मीटिंग इस डेट को, इस तारीख को करनी है, और हम जब देखते थे तो हम, मुझे लगता था कि उस तारीख में हो नहीं सकती है। तो मैं सर से कहता था कि सर, इसमें ये कठिनाई है, वो कठिनाई है, लेकिन हमेशा विदाउट एक्सेप्शन उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, जो भी कठिनाई है तुम इसको करो, और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद ये 2 साल की कमेटी 2 साल और मांगती। तो वो एक्चुअली रूथलेस थे, लेकिन इतने जेंटल थे, इतने हमेशा स्माइलिंग थे, इतने सपोर्टिंग थे। ही वर डाउन टू अर्थ। आई हैव नॉट सीन अनदर ब्यूरोक्रेट, एज सिंपल, एज डाउन टू अर्थ, एंड yet a great visionary, great vision. It is his vision which reflects from page one, literally from forward, and preface to the end of the high powered committee, and whatever has happened. In fact, not many people may know कि हाई पावर कमेटी का पूरा रिपोर्ट 10 वॉल्यूम में था। पूरा वर्क जो हुआ उस समय वो 10 वॉल्यूम में था। लेकिन हम लोग ने सरकार को, चूंकि सरकार को ऑपरेट करना है, तो 2 वॉल्यूम पेश किया था, सरकार को सबमिट किया था। एक था ग्रीन रिपोर्ट जो कि डेवलपमेंटल लॉन्ग टर्म था, दूसरा ब्लू रिपोर्ट था विच वाज नेशनल डिजास्टर रिस्पांस प्लान, कंडेंस करके। इसमें शर्मा जी का बहुत ज्यादा, एनसीडीएम में हमारे जितने भी, आई डोंट नो कि अभी चंदानी है कि नहीं, अभी अंशु शर्मा इसमें है कि नहीं, मनु गुप्ता है कि नहीं, लेकिन ऐसे कलीग्स का इसमें बहुत योगदान रहा जिसको कि मैं अभी एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से, मैंने बहुत समय लिया, मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे, लेकिन बातें तो और भी बहुत सी कहने की है, लेकिन आई थिंक समन के डिसिप्लिन को लेकर के चलना चाहिए। मैं तो अभी उसी की बात कर रहा था पंत साहब को याद करते करते कि समय का क्या डिसिप्लिन है। तो इसीलिए मैं अभी अपने बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं उन्हें नमन करता हूँ कि उनसे जो मैंने सीखा, उनसे जो मैं इंस्पायर हुआ, और मैं पूरी जिंदगी में जो मैं इंस्पायर होता रहूंगा, उसका उसका शायद, उसकी मैं, वो अतुलनीय है। हम समझते हैं कि हम, मेरे पास उसके लिए और कोई जवाब नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से उनको कोटि कोटि पुनः चरण स्पर्श करता हूँ, वंदन करता हूँ कि उन्होंने जो हमें दिशा दिखाई, हम उस दिशा पर और उसी संकल्प के साथ, संकल्प शक्ति के साथ हम आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके इतने भावनात्मक शब्द, और आपके चेहरे से भी सर आपकी भावुकता झलक रही है, तो हम समझ सकते हैं आपके मन की स्थिति सर क्या होगी। और
ये जो वासुदेवा आपने बोला, तो निखिल जी ने पोस्ट किया है, वॉलंटरी एजेंसीज फॉर सस्टेनेबल यूनिवर्सल डेवलपमेंट एंड इमरजेंसी वॉलंटरी एक्शन। ये इसमें कर्नल मैंने अपलोड भी कर दिया है वो डॉक्यूमेंट जो पापा ने लिखा था बड़ा, जिससे उससे, क्योंकि ये सब चीजें करते थे, फिर वो मुझसे शेयर भी करते रहते थे। उस समय मैं पढ़ाई कर रहा होता था आईएएस की, यूपीएससी की, या ये जो सोशल वर्क की। तो वो जो भी सिस्टम में करते थे फिर मुझसे शेयर भी करते थे, ताकि मुझे गाइडेंस भी मिलती रहे। तो ये मैंने सब प्रिजर्व किया हुआ है, ये सब डॉक्यूमेंट्स। बहुत बहुत बढ़िया अच्छी निखिल, बात है। थैंक यू। मैं यही देख रहा था कि जनरली सर्विस में जब हम लोग सब रहते हैं, तो बच्चों के साथ जो अपनी सामान्य कार्यकलाप है वो शेयर बहुत नहीं हो पाते हैं। लेकिन मैं निखिल जी से बात कर रहा था, जब इनसे बात किया तो मुझे ऐसे लगा, मुझे पंत सर का वो रेप्लिका दिख रही थी कि सर ने निखिल जी को भी अपनी जर्नी में साथ रखा, और उस तरीके सारी बातें जो वैल्यूज हैं वो सारी सर ने निखिल जी को भी बहुत अच्छे से बताई हुई है। दैट इज द वे टू टेक फॉरवर्ड द लेगेसी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत हमारे सम्मानीय सीनियर साथ में हैं और समय की का अभाव है। मैं सीधा जाना चाहूंगा श्री के एम सिंह सर के पास। के एम सिंह सर फॉर्मर फाउंडर मेंबर एनडीए में रहे हैं, एनडीआरएफ के फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा अवॉर्डी हैं। मैं केम सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से रखिए सर। श्री के एम सिंह सर। Thank you. Am I audible properly? यस यस सर, यू आर ऑडिबल। Well, at the outset, I'm sorry I have a slightly bad throat. So, at the outset, I would like to acknowledge my gratitude to Pant family, Sri Nikhil Pant, Sphere India Limited, and all organizers to provide me this opportunity to pay homage to a great personality who was an institution by himself in the field of disaster management. I did not have the good fortune like Anil Sinhaji, Colonel Srivastava, Vinod Menon, and others to work with late J.C. Pant personally. But soon after I joined as the founder member of NDMA in 2005, I realized what an immense contribution late J.C. Pant has made in the field of disaster management in the country. It was his visionary initiative which led to the enactment of Disaster Management Act 2005, which is a brilliant piece of legislation. But I must say, on every word, every section, every page, there is a mark of late J.C. Pant in this act. Well, this act brought about a paradigm shift in dealing with disaster management from relief-centric approach to a holistic approach. But I won't like to go in detail. I would straightway come to subject with which I was most influenced. In this act, there is a special provision for the disaster response. And there are two sections dealing with NDRF. Well, this putting the NDRF in the act provided a statutory character to NDRF. And this statutory status to NDRF, thanks to a report of late J.C. Pant, provided us enough strength to carry conviction with the government to ensure that NDRF becomes, or NDRF is trained, equipped as per international standard, as was envisioned in the report of late J.C. Pant. And I must say that NDRF ultimately turned out to be a truly professional force dealing with natural disaster, man-made disaster, trained as per international standard, and it has done commendable work in the field of disaster response in the country. I think we'll all agree
that NDRF has earned a niche for itself in the country in the field of disaster response, particularly in the hearts of people in the vulnerable areas, in disaster-prone areas. And for all this, credit must go to late J.C. Pant. Well, since there's a constraint of time, I won't like to go in detail. But let me, as the founder of NDRF, pay my heartfelt homage to late J.C. Pant, not only on my behalf, or on behalf of the entire disaster response fraternity in the country. He has been a legend, and his name will remain in the golden letter in the field of disaster management in the country for perpetuity. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your very, very substantive tribute to the legend. It's a great occasion and we all are emotional. I'm slightly taking a detour. We have a very senior scientist, Dr. R. Kelkar, Ranjan Kelkar, sir, who is on the waiting and he has an assignment to go. So before Menon, sir, I'll request Ranjan Kelkar, sir, with due permission of Menon, sir, if we can invite him to share his experience with Pant, sir, because the induction of science, the genesis of disaster, that Pant sir was very fond of Kelkar sir, and they were very good friends and they had a lot of interaction. So I'll invite Kelkar sir, Dr. Kelkar sir, for your deliberation, sir. Over to you, sir. Kelkar sir, he is at Pune. He was slightly not well, but still he said, no, I'll definitely come and join. Kelkar sir, are you there? Host, just see Kelkar sir. Yeah, I can see Mr. Dr. Kelkar. Please unmute yourself, sir. Please unmute yourself. Yes. Okay. There's a signal here that you can't unmute, so I was waiting. Thank you so much, Colonel Srivastava and Sanjay. I'm seeing so many old faces. Anil Sinha is there. I'm seeing after many, many years. And of course, Nikhil. So my pranams to everybody. I'll be very brief because many people are going to speak. And I'm happy to be here among so many older colleagues to take part in this prayer meeting, as it is called. I was asked to share some memories of our beloved J.C. Pant. My memories, let me confess, are rather short. They're brief and they're old because we were together from 1999 to 2002, after which I retired and settled down in Pune. But those memories are very vivid. I remember things very well, and I'll be happy to share a couple of memories here without taking much time. Our relationship was very clear. Dr. Pant was the chairman of the HPC and I was a member. This was our relationship and everything worked out according to that. And of course, Anil was the secretary. But as you all know, committees are made in the government in huge numbers. Every day there is a new committee and committees are forgotten, committees meet and they are never remembered. Committees, sometimes they give a report which is thrown in the waste paper basket. There are some committees which no one knows that they were existed. But J.C. Pant's committee was an exception. I mean, the way in which he handled meetings, Anil also was there in that way, in which he handled meetings, he called people, he talked to them. And it was something like that, that the recommendations were far-reaching, beyond the committee's expectations ever, but the far-reaching recommendations were made. Not only that, it's easy to make recommendations, but the recommendations were accepted by the government, and they were not only accepted, they were implemented. So all these things happened because of the committee's status, which was chaired by no less a person than J.C. Pant. So what we are today, that we have the NDMA, we have the NDRF, and so on,
is something because committee's recommendations were accepted and implemented in toto. And one of the things which Mr. Pant did was a major policy change that he took out disaster management from agriculture and put it in the home ministry. This was an extremely bold decision. Nobody expected ever to happen, but it happened. And all that has changed is because of such a major policy change which the government did, that it took out something from one minister and gave it to another. And all that we see today is the transfer of a mandate which has made things so different. So the results have been spectacular, I should say. And disaster management practices have changed completely in the country in the last 25 years. And not only that, preventive measures were prescribed and they are being taken. I mean, before a disaster happens, preventive measures are taken, like people in a cyclone situation are lifted literally and taken to safer places. And the rescue operations are successful. So this is, I think, credit goes to Mr. Pant that the loss of life is near zero now. And I think the whole country should express a debt of gratitude to Mr. Pant for saving the lives of thousands and thousands of people who would have otherwise perished in disasters. So we have all of us who have the privilege of working with Mr. Pant express our feelings in the way that, well, we're a committee member, but as a citizen of this country, I think we all owe a huge debt of gratitude to him because we are alive today quite a lot. Many of us was because of the HPC report and etc. So finally, I'll pay my personal respect and homage to Mr. Pant. My condolences to the whole Pant family. And may his soul rest in peace. Om Shanti. There are many speakers to speak, so I'll conclude here. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Colonel Srivastava, Yes, may sir. I make a small intervention because I may not stay till the end. I have a small suggestion to make. Taking cue from today's homage ceremony, I would suggest, if it is approved by Pant family and others, that let us institute a system of Pant Memorial Lecture every year on his death anniversary every year. And maybe it may be done by NDMA, and I'm sure NDMA will do that. So it is my humble suggestion to perpetuate his memory year after year. Thank you. Sir, I fully support, sir. Fully Yeah, that's a support good those- suggestion. Thank you. Thank you. Thank you, sir. We have noted the points. We'll convey this to NDMA, and National Institute of Disaster Management is also here, sir. So we'll take your word, sir. We'll definitely will note and will abide by it, sir. Thank you. संजय जी, जस्ट मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा जो डॉक्टर केलकर साहब ने कहा कि देखिए ज्यादातर कमिटीज बनती हैं जिनके रिकमेंडेशंस को रिव्यू करने के लिए सरकार दूसरी कमेटी बनाती है, लेकिन ये एक रेयर कमेटी है, हम समझते हैं हमारे कंट्री के हिस्ट्री में, जिसके रिपोर्ट को 100% एक्सेप्ट किया गया, 100% एक्सेप्ट किया गया। जितने 70+ recommendations थे, and the whole report was accepted and then put into implementation. It was pushed for acceptance at the political level, you see, because it was found that it must be, pushed further. So it went to political level with Pawar Sahab, and then rest is all history. I fully agree with you, sir. Whenever I get a doubt in DM Act 2005, I go back to the HPC report. So it's truly a Bible, sir, for everybody. And in times ahead, it will be so. It is not only the response and the science, he also saw the international collaborations, futures, role of academia. So, this much of vision coming to one person, that itself is a godly blessing, sir. With this, sir, thank you, Kelkar, sir, for joining, sir, and for your time, despite your schedule. You stayed back, you paid your homage, sir. Really grateful to you, sir. I would now move to Professor Vinod Menon, Vinod Menon, sir, for his deliberation. I'm sorry for the delay, sir. There's so many seniors. I'm sorry if some seniority or chronological order is getting changed. My due apologies, sir, but over to you, sir. Not at all. I think it's an opportunity
to be part of this celebration of life of Sri J.C. Pant. Even though we are saddened by the loss of such a legendary figure, I think we must use this opportunity as a celebration of life, of his life, of the fact that, he touched the lives of millions of people through his work in different parts of the country by mobilizing people. And Mark Twain had made a profound statement. He said, "The two most important days in your life are the day you are born and the day you realize why." I think once you have a purpose in life, Mr. J.C. Pansab had actually shown us that his life was a purpose-driven life. And Nikhilji mentioned about the ruthless way in which he was insisting on integrity, transparency, and truthfulness in the way in which we should, conduct our lives. And Vasudeva, the term Vasudeva was coined during the discussions in the High Power Committee. And many people even now do not know that the High Power Committee was set up before the Orissa super cyclone of 1999. Yeah. Many people actually believe that the Orissa super cyclone was the trigger, but at the same time, Sri Advani ji, as the Deputy Prime Minister and the Home Minister, wanted to have a High Power Committee for disaster management before the super cyclone actually happened. In fact, the super cyclone Orissa in 99, the Gujarat earthquake in 2001, and the Indian Ocean tsunami in 2004, all were watershed occurrences which really provoked the world to set up the National Disaster Management Authority, enact the legislation of the Disaster Management Act in so many countries around the world, the HOGO Framework for Action, which was basically to strengthen the national and community initiatives in disaster management, was actually one of the most important steps taken by UNISDR. And the NDMA was set up after the Disaster Management Act was passed. But my days in the High Power Committee from 99 to 2001, along with Sri Anil Sinha, Sri Vinod Sharma, and under the guidance of Sri J.C. Pant, were very formative years in terms of understanding the whole process. The churning which was actually happening in the meetings in different parts of the country were actually extremely instructive. And we try to also take forward many of those things in the National Disaster Management Authority. There's a Spanish poet, Mario de Andrade, who has written a poem called "My Soul Has a Hat." It ends with two lines. "We all have two lives, and the second begins when we realize we only have one." In one life, what is it that you can do to transform the lives of so many millions of people suffering from disasters and climate change and others have been seen from the life of Sri J.C. Pant. And I think when you really, one of the things which he had mentioned when we were talking about the role of taking a step to join the National Disaster Management Authority, Pansab mentioned that there is no limit to the good that you can do as long as you're not bothered about who gets the credit. I thought that was one of the words of wisdom, from a person who said that, if you really want to do things in life, there is no limit to the good that you can do as long as you are not bothered about who gets a credit. And I would like to pay my homage to Sri J.C. Pant and his legendary work. He had left a legacy, and Richa is taking it forward in 10 states, as Nikhilji mentioned. And we would like to extend all our support and cooperation. And I would like to just conclude with just a few words from a very famous poem by Ralph Waldo Emerson called "Success." "To laugh often and much, to win the respect of intelligent people, to endure the betrayal of false friends, to leave the world a little better, whether by a healthy child, a garden patch, or a redeemed social condition. To know that at least one life has breathed easier because you lived, this is to have succeeded."
to know that at least one life has breathed easier because you lived, this is to have succeeded. And I think Pansab's life is actually a testimony to the kind of things which we can all do in our lives. I would like to say, my prayers and my condolences to the friends, family, relatives, and all the people who really adore him. Thank you. Thank you so much, sir. All of us have very, very emotional attachment to Pant, sir, because today what the disaster management is, what the high-powered committee report was, that's the source of strength, not only to we all, but to the country and many countries. Whenever we go for policy or advisories, we always say, look, this is the way to go ahead. Now we have a very senior, rather the initial professors of disaster management, teachers of disaster management in the world, I'll say, Professor Vinod Sharma, sir. In fact, it was early 90s when sir was a professor in disaster management, and they have been the founding pillars of disaster management in India. As I move forward, I would like to invite Professor Vinod Sharma, sir. Sir, are you there? Yeah. Request you to unmute, Very sir. much there, sir. Yes, sir. I'm sorry for the delay, sir. You No had to problem, no problem. But it's your behest, sir. Today, we have tried to organize this, sir, and Sphere India Secretariat and Cropsey Secretariat has done a good job, sir, in getting people. I'm sorry, there is a limitation of 100 members. So we are, despite high demand, sir, we are limited to the numbers. So my apologies to those who are not able to join. But this event has a recording going on, and we'll be putting this on the social media, YouTube. People can go through it, sir. Professor Vinod Sharma, sir, is my mentor too. Over to you, sir. Thank you, Colonel Srivastav ji, Nikhil ji, Anil Sinha ji, and respected KM Singh Saab, Kelkar ji, my friend Vinod Menon. I think I will not repeat because of the time constraint, what he contributed in high-powered committee. We actually, we all become like a family actually. जो निखिल जी और इनका परिवार है, तो वो जितना दुख उनको शायद उनके ना रहने का हुआ है, उतना ही जो है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का परिवार है, उन सबको उतना ही दुख है. और हम सब उनसे बहुत फ्रीक्वेंटली मिलना नहीं होता था. टेलीफोनिक मेरी बात होती रहती थी. जब तक वो थे तो बहुत देर तक बात करते थे, बहुत प्यार करते थे, और मुझे उन्होंने बहुत प्यार दिया. मैं हाई पावर्ड कमेटी से पहले, सिन्हा जी को शायद मालूम होगा, एक दो इत्तेफाक हुए जो मुझे उनसे, जो मैं पहली बार मिला, वो हाई पावर्ड कमेटी से बहुत पहले की बात है. और 94 में, चूंकि 93 में मैंने एक इंटरनेशनल वर्कशॉप की थी यहाँ पे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में के लिए कृषि मंत्रालय की तरफ से, और उसके बाद में एक प्रपोजल दिया था कि यहाँ पे भारत सरकार से NCDM बनना चाहिए, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट. और उसका जो चूंकि UNDP और सब लोग तो चाहते थे कि यहाँ पे बने, और उसी समय जो है फिर सिद्धू जी जो हैं वो बदल गए और सेक्रेटरी होकर के पंत जी आए, और मुझे जॉइंट सेक्रेटरी RCA जैन थे, तो उन्होंने कहा देखिए ये सब चीज़ शायद नहीं हो पाएगी, आपने प्रपोजल दिया है, इसे चल रहा है, गवर्नमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, तुम इसको छोड़ दो. लेकिन मैं एक, जिसे जुनून कहते हैं, उस तरह की बात थी. तो हमने कहा कि हमारा आप सेक्रेटरी साहब से बात करा दें.
तो वो कहने लगे भाई मैं उन्हें पहले समझाऊंगा ये क्या चीज चाहते हैं, क्या पर्पस है, क्या नहीं है, उसके बाद में तुम्हें मैं मिलवाऊंगा। तो वो उन्होंने उस दिन मुझे नहीं मिलवाया। तो मैंने जो है सीधे पंत जी को टेलीफोन किया आईआईपीए से, और आईआईपीए में वाधवानी जी थे जो जो यूपी कैडर के थे, तो उनके पीएस से मैंने कहा कि उनको जरा सा बताइए कि यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छा वो किया था और वो उस संबंध में मिलना चाहते हैं। पंत जी ने मुझे तुरंत बुला लिया। तो मैं प्रपोजल की कॉपी लेकर के उनके पास गया। मैंने कहा सर हमने साल भर हो गया करीब ये प्रपोजल दिया है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए, ये एक शुरुआत होगी। और ये प्लानिंग कमीशन ने देखिए इस साल में ये लिखा है, सब चीज हम पूरे डॉक्यूमेंट लेके गए थे। तो वो पढ़ते रहे, उन्होंने एक एक चीज को पढ़ा, और पढ़ने के बाद में उन्होंने कहा कि देखिए आप मुझे 2-3 दिन के बाद में आइए। तो मैं 2-3 दिन के बाद में गया। अगले हफ्ते उनसे फिर मुलाकात हुई, और अगले हफ्ते उन्होंने जैन साहब को भी बुला लिया और मुझे समझाया कि देखिए आईआईपीए जो है वो एनसीडीएम के लिए उपयुक्त, एनसीडीएम तो होना चाहिए, बट एनसीडीएम कहाँ बनना चाहिए? एनसीडीएम या तो हैदराबाद में बने, या फिर उत्तराखंड में बने, या फिर दिल्ली में नहीं बनना चाहिए, और आईआईपीए में तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। तो अच्छा, दूसरा वो इतना फोर्सफुली अपनी चीज को रखते थे कि हमारे जैसा आदमी तो मतलब वो, तो उन्होंने हमको एक तरीके से बहुत शुद्ध शब्दों में समझा दिया कि ये जो है ये नहीं बन सकता है यहाँ। तो हमने कहा कि नहीं सर, इसकी बहुत जरूरत है, इसकी कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि ये बड़े, ये नेशनल सेंटर की बात करते हो, और वो भी फिर आईआईपीए में, तो ये नहीं हो सकता। नेशनल सेंटर की तरह से बनेगा, और जब टाइम आएगा तब बनेगा। तो उसके बाद में हमने चूंकि मेरी इसी बीच में जो है योकोहामा में मंत्री जी से मुलाकात हो गई थी, और मंत्री जी बहुत प्रभावित थे। हम जो बात हम कह रहे थे कि भाई ये कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए। बाय द वे पंत जी उसमें नहीं गए थे योकोहामा में, उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी को भेजा था, और ये गायत्री परिवार से और बहुत सारे एनजीओ को उन्होंने भेजा था, जो कि गवर्नमेंट के लोग भी थे। एक बड़ा डेलीगेशन था जो योकोहामा गया था, करीब 20 लोग थे। तो खैर मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, और मंत्री जी से हमने कहा कि साहब आप जापान में हमें कहते थे कि कुछ करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्यों? तो हमने कहा कि साहब हमने तो प्रपोजल दिया हुआ है, और लेकिन ये नहीं बताया कि हमने सेक्रेटरी साहब से मिले हैं और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है कि यहाँ। हमने कहा था आप कुछ कराइए, अब कहीं ना कहीं से शुरुआत करिए ना। तो उन्होंने कहा आप कल सुबह आ जाइए, हम सचिव साहब को भी बुलाएंगे, और इसको बनाना है, बिल्कुल करना है एकदम, और 6 महीने के अंदर अंदर करना है। तो हम अगले दिन फिर चले गए, उन्होंने पंत जी को भी बुला लिया, और पंत जी हमें देख करके एकदम से उनकी आंखें जो हैं वो लाल हो गई, और बहुत गुस्सा उन्हें आया कि ये लड़का है, ये सुन नहीं रहा है किसी की बात को। हम समझा चुके हैं कि भाई ये सब बनेगा, बाद में बनेगा, तुम क्या ये कौन आदमी है? तो उनके कुछ कहने से पहले ही जो है बलराम झाकड़ जी ने कहा कि सचिव महोदय, हम लोग जापान में मिले थे इनसे, और ये जो जापान जैसे छोटे छोटे मुल्क देखिए कितना काम कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं भाई? हमने तो अपना यहाँ पे कंट्रोल रूम देखा, वो भी 1 कमरे का है। इन्होंने हमको वहाँ पे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर दिखाया जिसमें बैठ के सारा चीज होती है। अरे भाई कुछ करना चाहिए हमको। और मैंने इनको कह दिया है शर्मा जी को कि 6 महीने के अंदर अंदर हम जो है एक नेशनल सेंटर बना देंगे। तो ये आप करिए, हमें हमें कुछ पता नहीं है, आप देखिए कैसे करना। और हमको जो है वो छोड़ करके, तो उन्होंने सचिव महोदय ने कहा कि आइए आप मेरे कमरे में आइए। और जैन साहब को, सिन्हा साहब वो बोले
कि मैंने ऐसा लड़का ही नहीं देखा। ये तो जो है ये किस मिट्टी का बना है भाई, ये मतलब। तो मैंने इसको मना कर दिया था, मैंने 2 दिन इसको खूब धमकाया, सब किया, ये तो जो फिर आ गया यहाँ पे। और बात तो कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आप इसमें कुछ इसे शुरू करिए। तो सर फाइल शुरू हुई और पहला जो चीज हुआ वो हुआ कि प्लानिंग कमीशन में प्रेजेंटेशन देना है। तो मैंने प्रेजेंटेशन बना करके मैं गया, तो सचिव महोदय बोले कि देखिए ये प्रेजेंटेशन मुझे दिखाइए। मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा ऐसा है, अब आप हमारे साथ रहिए और आपके बस की ये बात नहीं है, इसको अब मुझे करने दीजिए। एंड श्रीवास्तव जी, you believe me, in planning commission he gave this presentation on behalf of IIPA. He gave this presentation to the finance secretary. फाइनेंस एंड वो तो वहां से उस टाइम पे तो 1 रुपया मिलना भी बहुत मुश्किल का बात थी। दोनों जगह ऑन माई बिहाफ ही वॉज गिविंग द प्रेजेंटेशन। तो उनका पूरा रुख चेंज हो गया और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जो बात ये कर रहा है, जितना कमिटमेंट इस आदमी के अंदर है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए। और बाद में तो ये उन्होंने रिकमेंडेशन में हाई पावर्ड कमेटी की दूसरी तीसरी रिकमेंडेशन थी कि देयर शुड बी ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो बना बाद में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनका एक तो बिल्कुल साफ सुथरी बात करना, कोई पॉलिटिक्स किसी चीज में लाग लपेट नहीं होता था कभी भी उनकी। तो वाणी में बहुत सत्यता थी एक, और एक दमदार अफसर की जो बात होती है उनसे बात करके मजा आता था। बाद में वो हमको बहुत, एक तो बहुत सानिध्य रहा, इतनी सारी मीटिंग्स, इतना सब कुछ उनके साथ साथ हमेशा रहना, बहुत कुछ सीखा। और वो इसलिए भी प्यार करते थे कि हमें हमें वहां से पता चला, जब गायत्री परिवार में हम गए तो मैंने कहा कि सर हमें आपसे देखो सीनियर हूँ यहाँ पे। तो बोले कैसे? तो मैंने कहा कि 57 में जो है एक मथुरा में यज्ञ कराया था श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, और उसमें मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था और मुझे जो है उन्होंने गोदी में बैठाया था। तो तो वो हंसने लगे, बोले यस यू आर सीनियर टू मी। और हमने और अनिल सिन्हा जी ने और उन्होंने वहां पे भोजन किया उनके साथ बैठ के, डॉक्टर पंड्या के। और इतनी यादें हैं उनके साथ की, उतने संस्मरण हैं कि उस पर किताब लिखी जा सकती है। एक इतने काबिल आदमी और इतने इतने ज्यादा सरल, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी उनके मन में होता था उसको रखते नहीं थे। कभी भी कोई चीज है तो बड़े स्पष्ट वे में वो कहते थे कि भाई नहीं, ये सब नहीं होगा, ये नहीं मैं होने दूंगा। और फिर अगर वो कन्विंस हो जाते थे तो वो जानते थे कि जैसे हमने वो, हालांकि असभ्यता थी, लेकिन हमने कहा कि मिनिस्टर से सीधा मिला जाए, नहीं तो जो है हमारा काम होगा नहीं। उसके बाद में उनका जो रुख था और उनके बाद में जो उनकी सपोर्ट थी वो एक देखने लायक थी। तो मैं ये भी कहूँगा कि इवन एनसीडीएम के फॉर्मेशन में भी उनका बहुत योगदान है। उन्होंने मुझे बहुत, 2 हमने प्रोग्राम किए, दोनों में आए, दोनों का कोर्स मटेरियल देखा, एक एक पेपर पढ़ा, और जो वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट थे उनको कहा कि जो इन्होंने कोर्स मटेरियल बनाया है आप लेक्चर छोड़ दीजिए, जो कोर्स मटेरियल है अगर वही आपने पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए इस तरह की निष्ठा के लोग, इस तरह के इतना पढ़ने वाले, इतना वो, तो कम ही ऑफिसर। हमारा तो चूंकि आईआईपीए में हैं तो बहुत संपर्क हुआ है, बहुत लोगों को मिले हैं, लेकिन एक बिल्कुल अद्वितीय जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल जो सबसे अलग हो, उस तरह की प्रतिभा के आदमी थे। और आज वो नहीं है तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि उनके परिवार को तो कष्ट है ही है, बट हम सब लोग भी एक तरह से अपने आप को उस तरह से समझते हैं कि हम बिना, वो नहीं मिलते थे, उनसे बात नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, बट फिर भी उनकी जो प्रेजेंस है यहाँ पे देहरादून में ही, वही हम लोगों के लिए बहुत होती थी। मैं 1000 बार उनसे नमन करता हूँ, उनके परिवार को
मतलब कितना बड़ा कष्ट ये है। मैं मिसेस पंत से उनके हाथ की चाय भी पी है, मोती बाग में और सब जगह। एक बार कमल टावरी, बहुत सारी यादें हैं। कमल टावरी जी उन्हें लेके गए हमें उनके यहाँ। तो डॉक्टर साहब को, डॉक्टर पंत जो मैडम हैं, उनसे परिचय कराया कि ये IIPA में हैं। और फिर पंत जी ने परिचय कराया उनसे कि देखिए ये लड़का जो है, ये एक ऐसा लड़का है जो कि किसी की बात नहीं सुनता है। अगर इसने कोई चीज़ ठान ली है तो उसको कोशिश करता है कि और ये होना चाहिए। तो एनीवे, श्रीवास्तव जी, टाइम का अभाव है मेरे पास, तो मैं तो एक पूरी पुस्तक लिख सकता हूँ उनके उससे। और उनका अद्वितीय प्रेम हम लोगों के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए तो बहुत कुछ उनका कंट्रीब्यूशन है ही, सब जानते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान, एक बहुत सरल इंसान, इतने बड़े अफसर होने के बाद भी कोई अहंकार नहीं, कुछ नहीं, इतनी ज़्यादा सरलता। और बहुत कुछ सीखने को है उनसे और उनके जीवन से। मैं बहुत फिर से उन्हें नमन करता हूँ और उनकी आत्मा को शांति के लिए जो है प्राय गायत्री की मैंने माला उस दिन भी की। और गायत्री परिवार से, मेरे पंड्या जी से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारे परिवार, हमारे गायत्री परिवार को, सबको, शांति कुंज को, सबको बहुत बड़ा लॉस है। वो बहुत बड़े पिलर्स थे हमारे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार। मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर मिसेस आभा पंत एक मेडिकल ऑफिसर रही हैं, पंत सर की पत्नी हैं, और उन्होंने भी सबों की बहुत सेवा की। इनफैक्ट जिस जिससे भी मिलो वो हमेशा मैडम की भी हमेशा तारीफ करते हैं कि इतनी मेडिकल प्रोफेशनल होने के बावजूद, एक सेक्रेटरी की वाइफ होने के बावजूद, हमेशा लोगों को बहुत प्यार से और घर में बहुत आदर भाव से सम्मान मिलता था। मैडम को याद नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग और हम सारे लोगों ने मैडम का प्यार हमेशा पाया है। तो ये एक दिखाता है कि परिवार के अंदर किस तरीके के संस्कार और किस तरीके से सेवा भावना, आदर की भावना होती है सबों के लिए। और परिवार का मुखिया पंत सर सिर्फ सरकार के ही नहीं, अपने परिवार के अंदर जिस तरीके से उन लोगों ने सबों को ग्रूम किया, मैं हमेशा उनको प्रेरणा के रूप में लेता रहा हूँ। और मैं अभी, क्योंकि समय कम है और थोड़ा हम समय से पीछे भी चल रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, भंडारी सर हैं ऑनलाइन? RK भंडारी सर, प्रोफेसर RK भंडारी सर, अगर सर नहीं लाइन पे हैं तो मैं जाना चाहूंगा श्री नील माधव पृष्टि सर के पास। पंत सर ने एक बहुत बड़ा काम किया था कि इस पूरे हाई पावर्ड कमिटी में 600 से ज्यादा NGOs को अपने साथ आत्मसात किया था इस पूरे काम में। और उस काम में जो उनके अर्जुन थे वो थे नील माधव पृष्टि सर। उस वक्त वो स्फेयर इंडिया के CEO हुआ करते थे, या केयर में थे। मैं चाहूंगा कि पृष्टि सर ही अपने संस्मरण सर के सब बारे में बताएं। ओवर टू यू सर, प्लीज अनम्यूट सर। अनम्यूट नहीं कर पा रहे। होस्ट प्लीज अनम्यूट हिम। आई थिंक उसे दोबारा ज्वाइन कर रहे होंगे शायद कर्नल। Thank you, Colonel Srivastav. It is a very important moment today to remember the late Dr. J.C. Pant. I'll name that is the true father of disaster management in India, who laid the foundation of disaster management in the country. He gave a new paradigm. He led us to think differently, and on this occasion, I am able to see the the the, the gathering of the great luminaries of disaster management in India and in the world.
and I'm feeling very privileged to be able to put my words in front of all of you, and also the Pant family. I'm very happy to see Nikhil here and everybody, with including Madam Pant also here. I have few things that connects me to Pant Saab's work that let me tell in brief. Uh, you know, in India, generally uh, uh, people talk that in Indian bureaucracy, there are three categories of people. One category of people are value positive, and another few people are value negative, and there is a huge number of people who are value neutral. Uh, to stay neutral is a character of bureaucracy, and that's many argues in favor of that. But among those among those people who are value positive, I will not hesitate to put Mr. Pant as the number one in terms of value positive bureaucrat, and a very Puritan very bureaucrat. Uh, Even I have heard from people who have worked closely with him that he sometimes he comes in dhoti also to the office. So those are some of the people remember him for his purity, his purity in thinking, purity in action, are very independent minded in his work. Uh, Another thing that I like to share is that when I started my journey in disaster management in the late 90s, just before Odisha super cyclone, I remember I used to reach out to Professor Vinod Sharma to know, because in India, those days is very not very easy to find somebody who is aware of, or who is in a comprehensive understanding of disaster management in the country. And Professor Sharma used to tell me about the work of High Powered Committee, and I was knowing that there is a ministerial committee which is also traveling to many countries and looking at various disaster management structures, systems, processes, and coming back and to make a recommendation to the government of India to 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 start creating the architecture the of disaster management system in the country. And Sompalji was the minister, and that was during his time this committee was formed. And many of you would know that India, till Mr. Sompal became the minister, till that time, India did not have agriculture policy. He was the minister who, under him, the national agriculture policy was drafted. And I was told that uh, he made, he dictated the best part of the disaster management policy, dictated in Hindi, and it was prepared, and that is the time when the great work of the great minister was done. And under the same minister, this decision was taken to have a committee led by Mr. Pant to draw the architecture, draw the disaster management in the country. And Ponsap's work started, and it was happening. And I had the privilege of reading some of those drafts in Miss Professor Sharma's office, and sometime Professor Sharma used to give me some components of that, some sections of those draft work, and telling me very clearly that this is work in progress and this is not for circulation. But my eagerness to understand disaster management in a little more perspective, I think Professor Sharma was very kind to provide me those input that led me to think in a very comprehensive manner about disaster management. And that those days, for disaster management, reference used to be the Spear handbook, and I was fortunate to be a part of the design team of the Spear handbook. In fact, a good part of disaster management handbook was written by me along with my colleagues from many other countries and all that. But when I used to read those sections from Professor Sharma, I used to think
that if Spear worldwide people call Spear Handbook as the Bible of disaster management. But when I used to see those sections in the making of the High Power Committee report, I used to feel that if the Spear Handbook could be called as the Bible of disaster management, then probably this report which is going to come out is going to be the Gita for disaster management in India. These are all problems, all solutions are so clearly articulated. So for me personally, the High Power Committee recommendation, High Power Committee book, this blue book, green book, and all other associated documents, those gave me the comprehensive understanding of disaster management. So I am grateful to this work, and I feel privileged that the work has led to creation of led to my comprehensive understanding, and these work led to formation of the disaster management system, structure, and process. I very categorically mention system, structure, and process because that which Mr. Pant had envisioned. And there are a couple of things I like to mention here that many people have already mentioned about this GO-NGO coordination. This was the concept that was articulated in this high-powered committee, and the Vasudeva was the structure that was conceived by Pansab and Mr. Anil Sinha. I remember he used to be the champion of creating this Vasudeva structure. I remember when I went to him to invite him to be a part of the humanitarian coalition movement. He told me that in the High Court committee we have this Vasudeva concept, and let us build the Vasudeva concept around that, what you are talking about, humanitarian coalition. And the second important thing that I like to share with everybody here, again, the thinking of build back better, that was first it was conceived in this work, Pansab's work, and Anilji was the proponent on this theory that whatever we do, it should be better than what it was before. Because I remember many discussions, people used to argue that why there should be a minimum standard, why you want to have so many liters of water, so many square feet of living space. Why it is needed? If you look at people in India, they manage their requirements with much lesser quantity. Then I used to argue that the minimum standard is necessary to give a dignity to people's living. A life with dignity is important, and our constitution talks about this and all that. And this is what the theory that Pansab was articulated, and Anilji really propagated it in the best possible manner. And today, I think is the most popular terminology that build back better. Whatever we do when you do the recovery process or restoration process, that should be better than what it was there before the disaster. So these are some of the things that that will make Pansab remembered by all and everybody who are a part of this disaster management journey in the country. And India will remember, India should remember. I want to make few humble suggestions here. I think the suggestions like coming out with J.C. Pant Memorial Lecture. It should be either on his death anniversary or his birth anniversary. It should happen, and it should probably it will be most honorable event if the institution like NDMA does it or NIDM does it, but it should be done in a very honorable manner. This is one. Number two, I think we have this Netaji Subhash Bose Award. I think it is appropriate that we should make a nomination of Pansab and the HPC to be to get the next Netaji Subhash Chandra Bose National Award, and we should all make our nomination to the Prime Minister to make this happen. That will be a real tribute
to the father of disaster management in India. Let me tell the last thing that I like to share. Many people would know, or some of you would not know. Mr. Barua, who was the Secretary Agriculture, who is the secretary responsible for shifting the disaster management portfolio from agriculture to the home. In his he shared it with me in confidence. In his note to the Prime Minister, he wrote that disaster management is such a comprehensive subject as it comes out through the J.C. Pant report, that it will be the justice will be done, and the best possible place for this portfolio is an independent ministry. There should be an independent ministry headed by a secretary, disaster management, reporting to the cabinet secretary. Anyway, this recommendation was never accepted, and it went to the Home Ministry. But this was what is the power of the work that Pant Sahab did, and the committee did, and putting the best minds together and leading them the most efficient, effective way, created the Gita for this country, Gita for disaster management. And we feel honored that we have an instrument for us. And I wish all our disaster management institutions, both at national and state level, take lessons from this document, this work, and many more background work that has been done. I think those things need to be compiled and left for the researchers, students, and professionals working in disaster management area, so that nothing gets lost. This is, and I feel privileged. And let us pay homage, my homage to Mr. J.C. Pant on this occasion, and my prayer along with the family and friends of Pant Sahab. And I'm happy that Nikhil, who is a close friend of mine, but I wish I would have known him those days when I was beginning my journey in disaster management. Maybe Nikhil was in the school those days, but it was a great to meet and work with Nikhil. And I feel sad that I never got an opportunity to visit his house, visit Pant Sahab, and pay my regards in person. I feel honored to have this occasion to pay homage to Mr. J.C. Pant, the father of disaster management in India. Thank you, Colonel Srivastava, for your time. Thank you so much, sir. We have noted down your points, sir, and we'll formally put it across to the national institutions. Now we move forward. We have Professor Amir Ali Khan. Are you there, sir? Actually, we have overshot the time, and people in the office have to move out. So there may be slightly a miss by a few due to the communication. I would like to move forward. We have Shri Anshu Sharma, who is from Seeds India, and he has very fond memories of Sir. May I request Anshuji to please unmute yourself and pay your tribute. Thank you, sir. Sanjay ji, thank you for organizing this. Sharma ji's guidance. इतनी सारी memories हैं, आप सब भी जिस प्रकार याद कर रहे हैं. So the High Part Committee for me personally was, I think, the most profound learning experience. And beyond that, I did try to go even to other countries and learn, but I guess no degree course on disaster management in any university in the world can give the kind of learning that the HPC experience offered. और एक चित्र का मैं विवरण करना चाह रहा था, जो कि हमारी एक मीटिंग का है. कई सौ लोग इकट्ठे हुए थे और वेन्यू था शांति कुंज हरिद्वार. And what is really striking is, so we have this meeting where we have a very senior civil servant who's the chairperson. We have another very senior IS officer, Sinha Saab, as the member secretary, Professor Sharma, a lot of senior people. और सुबह 5 बजे कार्यक्रम शुरू होता है. गायत्री मंत्र का जाप है, यज्ञ है, सात्विक भोजन खाते हैं, प्रज्ञा पेय पीते हैं, मुझे आज तक याद है उसका स्वाद. और वहां से फिर बैठ करके सत्र शुरू होता है, जिसमें ये सारे सीनियर लोग नंगे पांव जमीन पर बैठे हुए हैं, आसन लगाए हुए, एंड दे रिमेन क्वाइट द एंटायर डे. You would have expected them to be convening a high-powered meeting.
And there are people from small civil society organizations. कोई चमोली से आया हुआ है, कोई कांगड़ा से आया हुआ है, वो सारे लोग दिन भर अपनी बातें रखते हैं, खुल के बात करते हैं, और ये लोग बैठे नोट्स लिखते रहते हैं. And for me, I think more than the subject matter, it was the humility and the spirituality of that entire process that makes the foundation of not just, that document and the series of documents that came out, which of course were really profound, but the entire, ethos that got instilled. So for many of us in our careers, I was very young at that time, but how it formed the basis of a lot of things I learned, and I could try to instill in my own behavior and my own work. And I think it sort of gave the Indian disaster management domain the foundational spirituality and philosophy, which remains completely unmatched in the world. तो उस समय शर्मा जी को और सिन्हा साहब को भी ध्यान होगा, इन्हीं के आदेश पर हम लोग ढूंढ के लाते थे. यूएस के हमने एग्जाम्पल्स देखे, और देशों के देखे, यूरोप के देखे, जापान में हमको स्पिरिचुअलिटी बेस्ड कुछ चीज़ें मिली, बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड हियर वाज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशनल एंड फाउंडेशनल. और वासुदेवा का जिक्र हुआ है. इट मे नॉट बी एक्टिव इन अ फॉर्मल वे. I would just like to say that the friendships and partnerships that got formed through that, they are still so alive and kicking. They are some of the most valued and cherished friendships and partnerships in my career till date. I'm in touch with many of those people. So it lives in spirit, it lives in work. And I think, as Professor Vinod Menon says, this is a homage and a prayer meeting, but it's equally a celebration. And along with my condolences to the family and to all of us, my heartiest congratulations that we could be the part of this journey. We could know this legend and be a part of his, ways of working, and we could learn from that and make our own little contributions. So really privileged and proud to be part of this. उनकी brutality तो मुझे पता नहीं चली, क्योंकि बीच में सिन्हा साहब और शर्मा जी थे. So they handled the bureaucratic part, but the value of doing the work stays with me forever. So thank you so much, and deepest love and prayers to Pant Sahab. Thank you, Colonel Srivastava. बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि उस जमाने में जो हमारे सीनियर्स होते थे वो इतनी स्पिरिचुअलिटी और कोalition को वैल्यूज देते थे, और जो अनुभवी लोग से उनकी बातों को सुनते थे. मैं इनफैक्ट चैट बॉक्स देख रहा था, वहाँ पे पोस्ट करा है एक हमारे प्रतिभागी ने, चला गया वो दीपक जो राहों को दिखाता था, शब्दों के सागर में जैसे मोती बिखेर जाता था. ज्ञान की वाणी थी उनकी, विचारों में थी गहराई, हर बात में सादगी, हर दृष्टि में सच्चाई. तो आप जब बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि वाकई जैसे ये कविता आप वर्णन कर रहे हो. तो ऐसी थी सर की महिमा. मैं समय के अभाव के कारण ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अनुरोध करूंगा डॉक्टर लॉय रिगो सर से अपनी यादों को शेयर करना चाहते हैं. लॉय सर, ओवर टू यू. Yeah, Please. thank you. I have unmuted myself, and it is an honor, a privilege to pay respects to the family of Shri J.C. Pant and himself, who has pioneered and shaped the direction of disaster management after deep study, reflection, consultation, and engagement. He shaped the process of formation of the NDMA. He shaped the outputs that disaster management should have, and focused throughout the time when he was heading the HPC in widespread consultation. And in fact, Vasudeva, which touched 600 NGOs in different parts of the country, I think there were 5 physical consultations there. We should attempt to strengthen and explore. Finally, they produced a focused report which identified actions to be taken and which helped shape and set up the future direction of disaster management agencies in the country.
and action at multiple levels, not just at the national, but the state, district, and below in the country. So it's important that it was set up initially after the earthquake in Uttaranchal in March of 99. And then, of course, we had two major disasters after that, close enough. November cyclone in Orissa in 99 and the 2001 Gujarat earthquake. And the HPC was upgraded. You had Sharad Pawarji heading the HPC, and it was a multi-agency, multi-party, what shall I say, not just consultation, but firm commitment to what needed to be done. So we are now today 20 years after the establishment of NDMA, its associate national agencies, as well as the SDMAs in 36 states and regions of the country, and I think around 704 DDMAs. And this is a massive set of agencies involved. There's much more which needs to be done, but they have already done a great amount, all shaped by and initiated by the initiatives of the committee headed by Shri J.C. Pant. I am glad to see that his family has established an NGO. And while I need to look at the website and understand what Riacha is doing, clearly it should establish a program to advance the ideas and direction of the NDMA, SDMAs, and DDMAs of the country, seeking active collaboration with them while working through. So I actively encourage us all to work with the NGOs more widely, as well as specifically with Riacha, to continue supporting the work of the agencies, as well as the work on disaster management, which is now well established by us in the whole country. And we recognize much more needs to be done, but we also are aware of the significant work that has already been done, and we must build upon and consolidate it. I'm glad that Nikhil ji has mentioned that Riacha was founded by Shri J.C. Pant in 92. I didn't know that, but I'm glad to hear it because it means that it's a well-established organization with far-reaching impact. And I think there's a lot of innovative work that could be initiated under it. I'm glad to see the website exists, and we need to do further work, building on this network of NGOs that Vasudeva articulates, as well as working closely with the state, district, and national agencies, as well as their partners. So I look forward to engaging with this, and I'm happy to contribute. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. In fact, we have a number of condolence messages. People were not able to attend. Shri Rajendra Singh, Head of Department and Member NDMA, Lieutenant General Syed Lata Hasnan, he has conveyed his condolences. Dr. Krishnawats, and many more. Since time is at premium, my apologies if I'm missing out some speakers. I acknowledge presence of Professor Sunita Reddy, who has written a book on Professor Sri J.C. Pant. I acknowledge presence of Sri Mrs. Rajni Srivastava and other distinguished participants here. And the whole program, Vikrant Mahajan, the CEO of Sphere India, his secretariat has helped us. Before I go to Nikhil ji for the final comment, I would request
Vikrant Mahajan to please say a few words. Over to you, Vikrant. Is Mr. Vikrant Mahajan there? Yeah. Not losing on the time, I would hand it over to Nikhilji and Pant sir's family if they want to convey. We are really honored that you all have joined in strength, and we have been able to share some of our memories. And there is a saying, if you share the memories, you lessen the grief. So hope we have been able to contribute, though it's very, very humble gathering from us, very small gathering. But since time, distance is a limitation, this is one of the best means we could gather, and we could pay our rich tribute, homage to a legend like Pansar. We would like to continue our association. Thank you very much for all of you joining us and giving us this opportunity. And Pansar, he will always remain with us. He'll be a guiding factor. I hand it over to Shri Nikhilji for his final deliberations. Over to you. का बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल संजय एंड टू एवरीबॉडी हुज बीन, जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। मैं भी अब थोड़ा हिंदी में ही बोलूँगा क्योंकि पापा भी हिंदी काफ़ी प्रेफर करते थे पूरे पंत परिवार के बिहाफ में और ऋचा के बिहाफ में। और जो जो सजेशंस निकल के आए हैं बहुत प्रोएक्टिवली हम लोग ऋचा से उसको टेक फॉरवर्ड करेंगे। वासुदेव भी मैंने सुना, और अभी लास्ट में भी सर बोल रहे थे कि कैसे हम लोग उन एनजीओज के संग वापस एंगेज करें। तो मैं वापस रीच आउट करूंगा विक्रांत आपको भी और ऋचा की टीम, हम लोग क्योंकि अक्रॉस द कंट्री काम कर रहे हैं। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एनडीए में मेरे संग टच में है, वत्स जी के साथ में और उनकी जो टीम है उन सबके संग में मैं मिला हूँ बीच में। और सीएसआर को लेके कैसे हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं और ऋचा का क्या क्या रोल हो सकता है उस स्ट्रेंथनिंग में, वो पूरी चीज़ें हम आपसे सीखना चाहेंगे कर्नल संजय और आपकी टीम से। और पापा की जो लेगेसी है, श्री जेसी पंत की लेगेसी को स्ट्रेंथन करने में, अगर आज उस काम में 20 इयर्स के बाद में कुछ एरियाज हैं जहाँ पर फर्दर स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, तो in whatever way we can contribute as a family, as Richa as an institution that Shri JC Pant had set up, and as I said कि पापा ने 1992 में इसको बनाया था रिटायरमेंट के 4 साल पहले, एंड हाईली एंड डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जहाँ के काफ़ी मैं इंसिडेंसेस सुन रहा था। तो वाइल आई न्यू द होल स्टोरी, पर मुझे और भी और जॉइनिंग ऑफ द डॉट्स हुआ है इस पूरे 1 डेढ़ घंटे में कि पापा कितना ज़्यादा सोच रहे थे। मिस्टर पंत वॉज थिंकिंग ऑल द टाइम। वो बहुत विजनरी तो थे ही थे वो, पर उसको इनटू एक्शन लाने के लिए किन चीज़ों को कर रहे थे, ऋचा को उन्होंने क्यों सेटअप किया, और फिर ऋचा आज काफ़ी सारा काम कर रहा है। हम लोग आज ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभी हुआ है, तो ऋचा ने अभी आज 1-2 दिन के बाद ही में अगले हफ्ते हम लोग उरी में प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं इंडियन आर्मी के साथ में, जहाँ पर अभी सब अटैक्स हुए थे। तो कहीं ना कहीं वो जो ऋचा में जो पूरा जो आइडियोलॉजी है श्री जेसी पंत की, वो डीपली एम्बेडेड है। डिजास्टर मैनेजमेंट उनके लिए बहुत एक कोर एरिया था। और क्योंकि हम लोग खुद उत्तराखंड से हैं, ये बहुत भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, नौलों को लेके पापा काफ़ी चिंतित होते थे कि वाटरशेड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था उनका, NWDPRA करके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में। उस वक्त मैं यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा था, तो वो सब जैसे मैंने बताया वो सब शेयर करते थे, मुझे बुकलेट्स ला के देते थे। तो हम लोगों ने जो श्रद्धा कुंज है यहाँ देहरादून में, उसको उन्होंने ऋचा प्रज्ञा केंद्र भी बोला है। उसमें हमने नीचे ग्राउंड में जहाँ पूजा हुई थी, अनिल सिन्हा जी आए थे, वहाँ पर हम लोग एक पापा का स्टडी सेंटर बना रहे हैं, ताकि कोई भी आए वो वहाँ पर बैठ के पढ़ सकता है, उनके काम को वो नोट्स बना सकता है, वो वहाँ रात को रुक भी सकता है। कमरा हम लोग एलोकेट करेंगे उसमें। और ऋचा का पूरा प्रयत्न रहेगा कि जो लर्निंग्स हैं वो उत्तराखंड से लेके बाकी भी जो स्टेट्स हैं उनमें कैसे, क्योंकि जो भी चीज़ मैं वोट ऑफ थैंक्स में बोलूँगा वो ऑब्वियसली वो थैंक्स ये है कि आप लोगों ने जो बताया है वो और एनर्जी दे रहा है मुझे और हमारी टीम को और हमारी फैमिली को। और अगर वो हमें एनर्जी दे रहा है तो जो एक ही चीज़ हम कर सकते हैं, वो जो हमें करनी चाहिए वो करनी चाहिए जो जेसी पंत करते।
वो है कि उसको और मोमेंटम देना, उसको और क्रियान्वित करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल बी इन टच विथ यू विक्रांत। संजय जी आपसे भी मैं मिलूंगा। पुष्टि जी से तो मेरी लगातार मुलाकात होती रहती है, सीएसआर के फ्रंट में बहुत गाइडेंस उनसे भी मिलती है। अनिल सर आपसे भी मैं मिलूंगा दिल्ली में आके। एमसी पंत जी भी मुझे यहाँ बैठे दिख रहे हैं, जो चेयरमैन ओपन स्कूल के रहे हुए, नेशनल ओपन स्कूल के, वो भी वो एनईपी 2020 में। अंशु जी आपने भी चीज़ें बताई, केएम सिंह साहब आपने भी बताई, मिस्टर मेनन ने बताया, विनोद शर्मा जी ने बताया, पापा इन सब के बारे में बात किया करते थे। मैं जस्ट अपने कॉलेज के बाहर निकला था और ये सब मुझे नाम वापस से सुनाई पड़ रहे हैं आप सबकी बात, आप लोग जो अपनी बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वो आपके संग डील डील भी करते थे, इंटरेक्ट भी करते थे, फिर वो मुझे आके मेंटर भी करते थे। कि उन्होंने क्योंकि शायद सोचा था कि ऋचा को वो बना रहे हैं, आफ्टर रिटायरमेंट उसको उस काम को आगे कैसे बढ़ाएंगे, तब तक तो वो सिस्टम के अंदर थे वो। पर अगर सिस्टम के बाहर रहे, उन्होंने कोई अलग से सच कोई मनी मॉनेटरी असाइनमेंट नहीं लिया। ही वॉज वेरी क्लियर कि जो पेंशन आएगी उसी के बेसिस पे मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। इनफैक्ट उत्तराखंड में भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के अध्यक्ष बने थे, और जब उत्तराखंड बना था तो उसमें उन्होंने बड़ा सेमाइनल काम वहाँ भी किया था। तो again, once again, deeply indebted to all of you on behalf of Pant family, Lalit, Mummy, my wife, Ruchi, Vibha, my bhabhi, Mudit, my son, Adi is here, Anusha, and Ruchi, my wife, and then Dr. Abha Pant. All of us are very very grateful for this. एंड आई थिंक हम लोगों को जो सबसे अच्छा लगा है, मे बी मैं उन सबके बिहाफ में कह सकता हूँ, वो ये कि जो आप लोगों ने जो कहानियाँ बताई हैं पापा के बारे में, कि वो किस तरह से एंगेज करते थे, इंटरेक्ट करते थे, और डीपली जाके उन उन सिस्टमिक चेंजेस को लाने का एक प्रयत्न करते थे, और जो भी पॉलिसीज थी वो ग्राउंड पे कैसे उतारते थे, वो आज भी डेवलपमेंट सेक्टर के लिए बहुत यूजफुल है। एक चीज हम और भी करेंगे, जो मैंने सोचा है, मैं पापा के काम की एक पूरी केस स्टडी भी बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और अभी कैपेसिटी बिल्डिंग जो कमीशन है, उसमें जो उनकी लीडरशिप में डॉक्टर अलका मित्तल है वहाँ पर, वन ऑफ द मेंबर्स, शी इज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओएनजीसी। तो उनसे भी मैं मिला था बीच में, कैसे हम नई पीढ़ी ऑफ आईएएस ऑफिसर्स को हम ट्रेनिंग दे सकें एज अ केस स्टडी ऑफ जेसी पंत। और अगर एक एक ब्यूरोक्रेट की केस स्टडी थी जिन्होंने इन सिस्टम्स में क्या काम किया, और सिस्टम के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूशन कैसे बिल्ड किया ताकि वो सिस्टम के संग कोलैबोरेट भी करे और कम्युनिटी के संग ब्रिजिंग भी करे। तो अगर हम वो केस स्टडी बना के हम और शेयर कर सकें प्रोबेशनर्स के संग या और भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के संग, तो मे बी और सिस्टमिक चेंजेस में प्रोएक्टिविटी और एक पॉजिटिविटी शायद आएगी। जो पृष्टि जी आप भी कह रहे थे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, मे बी वी हैव टू सी हाउ वी कैन मल्टीप्लाई दोज एंड इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ जो लोग पॉजिटिव साइड वाले हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच। संजय जी आपका बहुत अच्छे से आपने मॉडरेट किया, विक्रांत आपको और आपकी टीम को, एंड एवरीबडी हु स्पोक सो काइंडली अबाउट श्री जेसी पंत, एंड वी विल फॉरएवर बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। हम लोगों का बहुत बहुत आप लोगों के प्रति आभार, स्पेशली मैडम आभा पंत, डॉक्टर पंत के लिए। मैडम से हम लोग बात तो नहीं कर पाए, लेकिन मैम के बॉडी लैंग्वेज से हमें जो प्रेरणा मिल रही, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हैं और आप हम लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं। मैं अपने सारे सीनियर्स मेंटर्स, के एम सिंह सर, विनोद शर्मा सर, प्रोफेसर मेनन सर, ब्रूस्टी सर, अनिल सिन्हा सर, रेगो सर, सबका, अपने साथी, अपने सीनियर्स, अपने यंगस्टर्स जो बच्चे भाग ले रहे हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये पूरी बैक एंड टीम जिसने सबों को जोड़ा, ये ऑर्गेनाइज किया इतने कम समय में। मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूँ और बस मैं हुक्म चलाता रहा, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने सबको जोड़ा, ऑर्गेनाइज किया, पार्टिसिपेंट इतने थे कि पहली बार ऐसा इवेंट हुआ जहाँ कि लोग आना चाह रहे थे। मेरी क्षमा है कि वो ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि हमारी टेक्निकल लिमिटेशन थी। ये वीडियो रहेगा सबों के सामने, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस जो हमारी आज प्रार्थना सभा हुई है, मैं इसे प्रार्थना सभा नहीं कहूँगा, ये एक हमारी श्रद्धांजलि है, एक सेलिब्रेशन है, एक लीजेंड का, एक व्यक्तित्व का, जिसने पूरे दुनिया को अपने नौकरी के दौरान ही नहीं, बाद में भी बहुत प्रभावित किया। और अनेकों उनके आयाम हैं जिनको हमें जानने का मौका मिला। सबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं मैडम पंत की अनुमति से, सबों की अनुमति से अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की
इजाजत देने की कृपा करें। धन्यवाद। संजय जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को चलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद संजय, धन्यवाद। धन्यवाद अनिल निखिल। सिन्हा सर, आपने पूरा आपने इनिशिएटिव लिया, आप घर आए थे अनिल सिन्हा जी। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। Thank you. थैंक यू।